ओम शांति। प्रश्न मान्य सदस्यगण प्लीज आप परंपरा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। संसद की मर्यादा नहीं बनती है, प्लीज। संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी का निधन 74 वर्ष की आयु में 12 जुलाई 2026 को निधन हो गया है। सभा महामहिम अमीर शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर कतर के लोगों और शाही परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्न मान्य सदस्यगण प्लीज आप निधन संबंधी उल्लेख के समय सदन की मर्यादाओं को बने रहिए। अपेक्षा तो करते हैं ना हम, नहीं, सदन के अंदर ये अपेक्षा है कि कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है। उन मर्यादाओं परंपराओं को पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं। मेरी सदन में हमेशा ये अपेक्षा रहेगी सदन की परंपरा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मैं सबको उचित समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है। आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है, प्लीज। प्रश्न का L. Murugan ji. Respected Chairman sir, with your kind permission, I rise to lay on the table the under subclass A of class 2 of the Article 123 of the Constitution, a copy each in English and Hindi of the following ordinances. One, the Supreme Court number of judges amendment ordinance 2026, number 1 of 2026, proclaimed by the President on the 16th May 2026, and the Income Tax Amendment Ordinance 2026, number 2 of 2026, proclaimed by the President on the 5th June 2026. Thank you. Stated by my Minister, Sriman Suresh Gopi ji. Most respected Chairman sir, with your permission, I rise to make the statement in the House listed against my name at serial number 4 and today's list of business regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 4th report, 18th Lok Sabha, of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas on litigations involving oil PSUs pertaining to the Ministry of Petroleum and Natural Gas. This may please be considered as read. Thank you. Sriman Sanjay Jaith ji to move a motion for election of one member to the Central Advisory Committee for the National Cadet. 12 read with the subsection 1A of section 12 of the National Cadet Corps Act 1948. This House do proceed to elect in such a manner as the chairman may direct one member from amongst the members of the House to be a member of the Central Advisory Committee for the National Cadet Corps. Motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. I have to inform the members that the consequent upon his re-election as the Rajya Sabha with effect from 26th of June 2026, I have accorded recognition to Sriman Mallikarjun Kharge ji, member and the leader of the Indian National Congress Party in Rajya Sabha, as the leader of the opposition in Rajya Sabha with effect from 26th of June 2026.